Okay, the recording has started. Fair enough. So we are making a one-to-one correspondence between between Praveen sir's lecture series and the study manual for SOA. So based on that, we will set our targets. The target is to complete Praveen sir's lectures with some practice of ASM study manual by the first week of September for the people who are giving it in October. Okay. Now, so broadly, all these three topics come here. Okay. आई थिंक इवन पेमेंट स्ट्रीम चेक कर लेता हूँ मैं. पेमेंट स्ट्रीम एएसएम में तो पेमेंट स्ट्रीम के क्वेश्चंस नहीं है. हाँ, क्वेश्चंस नहीं है पेमेंट स्ट्रीम के. नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ ये फोर्स ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे. पेमेंट स्ट्रीम इज नॉट देयर बाय एंड लार्ज. पेमेंट स्ट्रीम शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, बट स्टिल करके रख लेना. just watch the concepts so you have some clarity on it, but I do not expect a question from payment streams. Now, section 3 is level annuities, which is as it is here. Usme there are a couple of concepts like there is the concept of balloon payments, and there are some tricks and shortcuts which are useful in the exam, but which are not there in Praveen sir's lectures because they don't come in IFOAI. So I will be taking those shortcuts. It will take hardly half an hour to 45 minutes, and I will explain all of those things. Okay. Now, section 4 is naturally complex annuities. Complex annuities is increasing, decreasing. Usme bhi, there are a couple of things which additionally I will have to teach you, which I will do over the course of this month. Complex annuities. Now, your project appraisal is equivalent to section 5, which is comparing investments. So you don't have to do project appraisals pehle and loan schedule baad mein. You can do them together also. It doesn't matter. Loan schedule is equivalent to the section 6 loans. Loans is more or less the same in both the loan schedule is more or less the same. Of course, in SOA they don't ask, because it's an MCQ payment, they generally don't ask to make you a whole loan schedule, but they do ask what is the principal repayment component and what is the interest component of some things. Now, bonds, same as section 7 bonds. Bonds is extremely important. Bonds पे इतने question पूछते हैं, and bonds maybe there is a lot of variety. And so I will also deal with bonds in a lot more details because the way the bonds are done in SOA is quite different than how they are handled in III. तो एक background knowledge के लिए प्रवीण सर के lectures, but we will go do bonds मोटा मोटी again in my classes. ठीक है. Financial instruments is also so there is a bonds के साथ bonds equity और वो होगा ना, bonds equity and real estate. Yes, there are, मतलब उसका पूरे टॉपिक का नाम bonds equity and something something होगा ना. अब जो लेक्चर सीरीज में टाइटल है, कैन यू कंफर्म? वहाँ पे 3 ही वीडियोस है बॉन्ड्स की. बोर्ड्स एंड टर्म स्ट्रक्चर सम्स, बॉन्ड्स मैट सम्स लिखा हुआ है सर. लाइक मैट का क्या फुल फॉर्म होगा, और लास्ट है बॉन्ड्स इक्विटी प्रॉपर्टी करके कुछ नहीं है क्या? नहीं है सर, ये बस तो ये है. ओके, मतलब वो देख लेना, उसमें होगा नहीं होगा तो भी. द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड्स वाला पार्ट इज मतलब द एप्लीकेबिलिटी इज द सेम. प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, उसमें सब में द सेक्शन 8 है ना, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल सेक्शन.
Second, it uses the same it uses more of the same concepts here, so that will not require any other special knowledge ऐसे अलग से. Now section 9 is different. Section 9 is something that you should read once. So section 9 में ना एक PDF है. That PDF is available on the SOA का page. Okay, so it is a 47 page PDF. वो PDF डाउनलोड कर लो और वो PDF पढ़ लो, and I will and figure out where you have doubts in those PDFs, and I will take one class explaining the doubts. ठीक है? That PDF is important. एक दो नंबर का उसमें से वो पूछ लेते हैं थ्योरी कभी कभार. ठीक है? It is a theory thing. Is that fine? Is that fine? Yes, sir. So I will once we are done with the concept classes, so you have time till the first week of September to read that whole PDF. 47 pages है, एक एक दो दो पन्ना तीन तीन पन्ना भी पढ़ोगे दिन का तो हो जाएगा. But you need to have doubts. You need to make sure that you keep a track of your doubts, and I will clarify all of them. Okay, is that fine? Yes, sir. तो वही है, एक दो क्वेश्चन से ज्यादा आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट, बट एक दो क्वेश्चन भी अपने लिए सब्सटेंशियल हो जाते हैं बिकॉज वी आर एमिंग फॉर 24-25 आउट ऑफ 30. नो नाउ S10 duration, so this is the term structure: duration, convexity, immunization. This is what is term structure, along with S11 interest rate swaps. Okay, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का जो स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट का है, दैट इज द पार्ट ऑफ टर्म स्ट्रक्चर. उसमें जो लास्ट का पार्ट है, द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट स्पॉट, दैट इज नॉट इन प्रवीण्स लेक्चर्स, दैट इज समथिंग दैट आई विल टेक अलग से. ओके, सो ब्रॉडली दिस इज द फ्रेमवर्क. ठीक है, this is the framework, and so okay, now let's talk about classes. ठीक है, I will be very honest, online mode is difficult, not insofar as I don't know how to teach online. I have been doing that exclusively, but because I cannot, in a classroom, a teacher can judge how much a student is understanding by looking at them, by looking at how their their facial expression and stuff like that. That luxury is not available to me. Usually मेरा कैमरा चालू रहता है, पर I've been facing some issues with my laptop for the past month or so. तो अभी मेरा कैमरा फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर बंद रहेगा, बट स्टूडेंट्स का तो कैमरा कभी चालू नहीं रहता. एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ ग्रोस ओवर एक्सपेक्टेशन टू हैव स्टूडेंट्स स्विच ऑन देयर कैमरास. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई हैव नो आइडिया how much are you understanding, how much you're not understanding. So any feedback to me कि ये नहीं समझ में आया, ये समझाओ, कि धीरे बताओ या तेज हो जाओ, all of that feedback needs to come verbally from you. ठीक है, how I see a tuition class setup is that you are paying for a service. Now if you have issues with how that service is being delivered, हमको भविष्यवाणी नहीं है कि हमको सपने में नहीं पता चलेगा कि oh you are not comfortable. So it is your responsibility to make sure that you extract 100% out of us. ठीक है, which means you ask doubts, which means you make sure that the way I'm teaching is okay for you. ठीक है, and the second thing is, if you attend my classes, I will be able to personally figure out what adjustments do we need to make in your preparation. If you don't attend my classes and if you watch the video lectures, or if you attend so we won't have a lot of classes. We will have 10-12 classes at max, right? Of course there will be longer classes because 1.5 hours, 2 hours, but it won't be a lot of classes. So if you only attend 2 or 3 of my classes intermittently, I will have no clue where you are standing vis-a-vis your preparation, right? So
The bottom line is this: I will know who is going to pass and who is not going to pass in the normal course of business, unless something very horrible happens, कि panic ही हो गए और कुछ हुआ ही नहीं. I will know generally who is going to pass, who is not going to pass, provided you attend my classes. Provided I can help you, either increase your pace or shift your focus or something like that. ठीक है? तो bottom line is, I only take guarantee for the students who will attend my classes. For the students who don't attend live classes, I cannot take guarantee because I do not know how much they've covered. That the ultimate choice remains with you, whether to attend or not to attend. But the responsibility of making sure that you pass rests only with me if you attend the live classes. क्योंकि नहीं तो मेरे सारे वीडियोस द मोमेंट आई एम डन रिकॉर्डिंग, आज रिकॉर्डिंग हुई नहीं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मतलब आधे सेशन की, बट मेजर चीजों की हो गई. इफ my all of my recordings will be there, all of my concepts, even for October, even for the August session, the recordings are there. So all the concepts are already there. You don't even need to wait for me to complete it in this session. You can go through the August ke videos. But it would be good if you can attend my live classes, because you get to interact with me, you get to ask doubts as they arise. Second, I can also make adjustments to how you are studying, right? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ओके. दैट डज नॉट मीन कि अरे यू हैव टू अटेंड ऑल ऑफ माय क्लासेस, मरे जिए तुमको बुखार है, कुछ भी हो रहा है तो भी तुम अटेंड कर रहे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस यू शुड बी अटेंडिंग. ठीक है. द रिकॉर्डिंग्स आर अ लग्जरी इन माय ओपिनियन, कि अगर इफ यू बाय चांस मिस अ क्लास, यू आर एबल टू सी इट अगेन. ठीक है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये 2 हफ्ते का थोड़ा सा chaotic है, उसके बाद से इट विल बी फिक्स्ड एंड इट विल बी रेगुलर. ठीक है. अदर्स, विशाखा, शिक्षा. सर क्लासेस सैटरडे संडे होंगी ना? सैटरडे संडे ओनली, बिकॉज अदरवाइज फिर वो मोस्ट पीपल आर वर्किंग, तो फिर वो ड्यूरिंग द वीक या तो लेट नाइट रखो या अर्ली मॉर्निंग रखो, एंड दैट इज अ हैसल ऑनेस्टली. बट प्लीज, मतलब मैं डेमोक्रेसी चला नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट रनिंग अ डेमोक्रेसी. सो ये इंट्रोडक्टरी सेशन वाज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड फॉर एवरीबॉडी कि कब टाइम, क्या टाइम. इसके बाद टाइम्स आर फिक्स्ड, एंड मतलब वो है कि द रीजनेबल टाइम्स 10 AM on Saturday and 1:30 AM on 1:30 PM on Sunday, not unreasonable times. मतलब संडे को दोपहर में, यूजुअली सैटरडे, फॉर बोथ फॉर सैटरडे एंड संडे इवनिंग्स आर टाइम्स दैट यू नीड टू हैव फ्री. तो सुबह और दोपहर में ऐसा मेरे को नहीं लगता कुछ इशू होता है क्लास अटेंड करने में. ठीक है. इज दिस फाइन? Yes, sir. Yes. तो अभी okay, so because so in August there was one student who was constantly in touch with me, attended all the live classes, and I was able to 10th ko class. 10th is what? No, not this. This is not applicable for this week. This schedule is applicable from the week after the Independence Day weekend. If so, another thing that we can discuss, only for the, so abhi till 17th, I will give you time to watch substantial number of recorded lectures. So if you can complete till complex annuity till 17th, that would be great. If you can cover more, even better. ठीक है. पर कम से कम लेवल एन्युइटीज हो जाना चाहिए. Anything better, anything more than that is a bonus. Is that fine? Yes, sir. So you have roughly आज से you have around 8 days into 4 hours per day, so you have 32 hours. So 32 hours, वैसे भी I don't think anybody watches lectures on 1x, right? तो देख रहा है 1x पे lectures? No, sir. No, sir. हाँ, तो into 1.25x at least.
So you have, I think 40 hours. हाँ, you have 40 lecture hours that you can see, right? By 17, तो उसमें भी 15 अगस्त को कोई कुछ करता नहीं है, सब छुट्टी मनाते हैं, तो ज्यादा देख सकते हैं. तो ऑल ऑफ यू हैव इनफ टाइम कि अक्टूबर में हो जाएगा. 150 आवर्स आराम से निकलते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होती. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स एन्युइटीज तक कोशिश करो कि 17 वाले संडे को हो जाना चाहिए. उसके बाद टेल मी, विल यू बी कंफर्टेबल विथ मी टेकिंग, जस्ट क्योंकि अपन ये नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं लेंगे, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट वुड इट बी फाइन if I take late evening classes in that week only, कि we don't take any classes and we start um, directly from 23rd and 24th. 23rd and 24th को, if you say कि we are fine with starting from 23rd to 24th, that is fine by me. But if you want, I can have a class between 17th to 23rd on late night classes on some days. We can have, sir. Huh? We can do. 23rd and 24th. Others? पहले विशाखा शिक्षा 23rd and 24th से चालू करेंगे रेगुलरली फिर. सर एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग देखना. हाँ. सो मेरा पेमेंट स्ट्रीम तक मेरा हो गया है. सो मैं इसके बाद ना स्टडी मटेरियल को ही रेफर कर रही थी. जो ASM. नहीं, मैंने एएसएम नहीं किया था एक्चुअली. मैंने पहला वाला था ACTEX वाला. नहीं नहीं, फॉलो ASM. हाँ जी, वो अब मैं वहां से स्टार्ट करूंगी. हाँ. तो उसमें ना सर एक टाइम इंटरवल वाला एक क्वेश्चंस आते हैं, लाइक विद फॉर्मूला कि टाइम इंटरवल दे रखा है एंड FA माइनस F0 डिवाइडेड बाय FA. सो ये वाला फॉर्मूला है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है. Actrix में. हाँ सर, इसमें भी है ना, ASM में भी है, मैंने अभी भी देखा. Can you tell me the page number? सर स्टार्टिंग में ही है ये तो. पेज नंबर इज पेज नंबर 910. पेज नंबर इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है AT माइनस AT माइनस It is nothing. वो हाँ बहुत जी. सिंपल है. AT is considered the value of ओके. fund at time t. ठीक है. AT minus 1 similarly is value of fund at time t minus 1. मतलब आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपया है at time 0. आपके बैंक अकाउंट में 110 रुपया है at time 1. तो ये हो गया t, ये हो गया t minus 1. AT minus 1 is equal to 100. AT is equal to 110. Just a minute, pencil में issue है. AT is equal to 110. तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपन? नॉर्मली इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 110 में से 100 गया, 10 बचा, 10/100. इट इज एग्जैक्टली दैट. वो खाली उसको मैथ्स के नोटेशन में लिखा है और कुछ नहीं है. एंड सर अच्छा ठीक है, इसमें आई डू नॉट थिंक सो कि इसमें टाइम इंटरवल दे रखा है. टाइम इंटरवल जो t माइनस t-1 है वो टाइम इंटरवल हो गया ना. अच्छी, उसमें ऐसा लिखा था कि टाइम इंटरवल इज 2 to 5 एंड फिर उस और एक इंटरेस्ट रेट दे रखा था, देन आपको कैलकुलेट करना है. तो उस टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल 2 to 5 मतलब यू आर स्टैंडिंग एट टाइम 2 एंड 5, तो ये टाइम इंटरवल 3 हो गया. अब या तो वो आपको टाइम 0 पे वैल्यू निकालने बोलेंगे, या टाइम 2 पे निकालने बोलेंगे, या टाइम 5 पे निकालने बोलेंगे. ठीक है. 5 पे निकालने बोलेंगे तो यू विल अक्यूमुलेट. 2 पे निकालने बोलेंगे तो यू विल डिस्काउंट. 0 पे निकालने बोलेंगे तो आप वैल्यू पहले 2 पे निकालोगे और फिर उसको और 2 साल के लिए डिस्काउंट कर दोगे. The best way to go about solving any question in FM is to draw a timeline. ठीक है. The best way is you start drawing a timeline, you figure out where the cash flows are, you figure out where you have to bring them to, and then you go about doing it. ठीक है. Now
So try to cover as much as possible. Complex annuity is a baseline. ठीक है? Complex annuity is not the maximum that you can do. It is a baseline कि इतना तो करना ही है. अगर आपको इतना टाइम मिल रहा है कि आप पूरे लेक्चर्स देख पा रहे हो एक बार में, तो नथिंग लाइक इट. अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम लोन शेड्यूल कॉम्प्लेक्स एन्युटी तक खत्म कर देना. ठीक है? बिकॉज उसके बाद सिंस the concepts that are not covered in the lectures are also from all the chapters, I will only be able to take बाद के concepts when you are done with पहले के पूरे concepts. ठीक है? So if you are done with the whole course one, then I can in like 4 classes cover everything else that is left out. नहीं तो I will have to wait till you have till everybody has done term structure to do interest swaps and so on. ठीक है? Is that fine? Yes, sir. Okay. But as much as possible. So our class, next class will be on 23rd. उसके बाद से we will have 2 hour classes each. 23rd, 24th उसका I think 31st वाला weekend है, वहाँ पे और classes होंगी. And by September first week का जो weekend होगा उसमें पूरे concept खत्म हो जाएंगे मेरी तरफ से. ठीक है? उसके बाद you have around 20 odd days just to keep practicing. ठीक है? How will you go about doing this? You will watch Praveen sir's lectures. You will find out the relevant material from ASM. And ASM में हर section के बाद exercises रहती है. आपको वो exercises solve करने की. ASM is slightly on the more difficult side than the actual exam. ठीक है? Okay. So I will see you on 23rd. Is that fine? Again, I am asking you, उसके पहले class रखनी है क्या? सर अगर लगी नीड तो ग्रुप पे बोल देंगे. हाँ. पर जी पहले सर, बोलना. हाँ? एक्चुअली प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस करेंगे आई गेस हमें तब जरूरत पड़ सकती है. तो उसमें कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मेक अ लॉग. उसमें आपको पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के रखना है. मैं या तो 23rd की क्लास इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आई विल जस्ट कीप ऑन अ डाउट क्लास. एंड अगर आपको इफ यू सी दैट अ टॉपिक इज नॉट डन ऑल टुगेदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आया, तो दैट प्रॉब्ली मीन्स दैट आई विल बी एनीवेज गोइंग टू कवर इट. ठीक है? तो अगर आपका कोई टॉपिक है जो हो चुका है और उसमें डाउट्स आए, तो फिर that is when you make this log and I will take all of them up. Okay? ओके सर. पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर का लॉग बना लेना. एक साथ अपन सारे निपटाएंगे. अगर सर ज्यादा दिक्कत आएगी तो बीच में कर लेंगे सेशन, वो हम ग्रुप पे ही अपडेट हाँ कर हाँ देंगे. हाँ हाँ. ये अगर इफ बहुत सारे डाउट बीच में ही कलेक्ट हो गए तो एक हाँ. लेट नाइट सेशन रखना पड़ेगा अपने को डाउट सॉल्विंग के लिए. लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग. बिकॉज वीकेंड्स एज आई सेड ब्लॉक्ड है मेरे अभी. ओके. ठीक है? And honestly, अगर बहुत सारे doubts है, so I don't mind taking just a session for the person who has a lot the doubts. I don't mind that. So that we can discuss and we can keep accordingly. ओके. तो सर पहले हमें लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं टॉपिक वाइज, देन जो सैंपल क्वेश्चंस है फिर पहले वो करने हैं, फिर ऐसे ऐसे कवर करना है ना. ASM के questions करने हैं. And then there is a file of 500 odd 480 odd questions that is exam representative questions. वो अपना जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो then we will start solving them. ठीक है? ओके. All right. Sometimes the language of SOA is different from language of IAI IFOA. So if you are not able to get the questions, it just means that you have to read the section before that. ठीक है? वो section पढ़ोगे तो language clear हो जाएगी कि मतलब they are calling this by this name. ठीक है? क्योंकि बॉन्ड्स एक चैप्टर है जहाँ लैंग्वेज का सब्सटेंशियल फर्क है. मतलब SOA has its own particular way of presenting that whole topic. ठीक है? But it's only about presentation. It's not, the crux is the same. All right. I was hoping for a shorter session, but ये 50 minutes का तो हो ही गया.
ठीक है, एनी हाउ, you all